those things. For today's session, my agenda would be like to make you understand what happens as a data analyst from starting to ending. Okay, what is the architecture? How the data movement happens from starting from scratch till the end user. Okay, that is what I am going to tell you. Meanwhile, if you get any kind of questions or anything you want to ask me, stop me and ask me. Okay, is that clear? Yes, sir. Yes, sir. First point, let's try to understand what is data analyst or business intelligence and all. Okay, why do we need a data analysis? Why do we need business intelligence? Okay, the main reason is, for example, if you see you own a company. Okay, you own a company. Okay, right. I can also speak in Odia. Okay, I was born and brought up in Hyderabad, but mo Odia be koi paribe. There will be mane ଟିକେ ନାକୁ you may feel the accent difference, but I can understand. ତମେ ଯାହା ବି କହିବ, I can understand the Odia. Okay, if anybody would Please continue, sir. Odia. So guys, you can go on mute. Whenever you have some question, you can unmute and speak. Otherwise, you can go on mute. Otherwise, we are getting a lot of background noise. Okay. Right. Okay. So let's see. So IT रे, for example, तम पाखर गोटे company अछि. You own a company. Okay. So you have made a turnover. Like for example, 2023 रे, you made a profit of, for example, 1 million. Okay. So 2024 रे तमे कोन चाहिबो? You want to increase your business, right? Or do you want to be stay in the same position, or do you want to leave it whatever happens jaha hoba dekha jiyo? एमती हमें भाबिबा ना. Would you like to grow in general? Yeah. Want to grow. Definitely हमें next year, next 5 years हमें grow करिया को चाहिबा. Okay, because of different reasons. Maybe tomorrow jete employees achanti, tanko salary also you need to give hike. Okay, tomorrow lifestyle also you want to increase. So everything depends on the money. So how does that money comes? You need to improve your business. So our business जेतल हमें grow करिया को चाहिबा next year के next 2 years ପାଇଁ का, we need to make a plan. Right, हमें गोटे plan बनेया पड़ो कि हमें next 2 years की 3 years से कौन करिले, how our business will improve. हमें number of products को बढ़ेवा, कि number of branches we will increase, कि number of employees recruitment हमें increase करिबा, कि number of माने employees को हमें reduce करिबा, कि कौन करिबा, we need to make a plan. So सेटा random decisions we cannot take, right? One fine day morning we get up and think कि नहीं आज गोटे काम करिया कि आओ 10टा branches open कर दबा. एमिति भाबिले we will not be able to grow. We cannot take random decisions. हम पाखरे for example 10 lakhs रो budget अछि for training purpose. 100 employees अछंती. You with that 10 lakhs you can train only 50 employees, for example. Say 50 employees kaha ku train kariar अछि. You cannot randomly pick 50 employees and give training. That will not help you. କାହିଁକି ନା already they might be performing good. You are taking them ଆଉ ତାଙ୍କୁ training ଦଉଛ, so it will not help. But ସେଇ 100 members ରୁ ଯଦି ତମେ ବାଛିବ କି 50 members ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଭଲ କି perform କରିପାରୁ ନାହାନ୍ତି, and then train them, then they will show you the results. So how do you find them? କୋଉ products ଏଗୁରା ଯୋଉଗୁରା ଅଛି last 10 years ରୁ ଚାଲିଛି ଯେ but they are not giving me enough profits. So we need to find them. The products कौन जोटा कि मते profits दौनी. We are putting money into marketing, we are putting money for the manufacturing, but it is not generating me profits. So those information I need to find out, and based on that I need to take decisions. Yes or no? Yes, sir. Yes, no? Right. So सेगुरा information हमें कोठु बाहर करिया? Based on the available data. हमें जितल भी गोटे supermarket जिबा कि online रे Amazon website रे कि Flipkart website रे if you purchase anything, सेतल कौन मागे हमरो details मागे, हमरो user ID हल्ला कि हमरो phone number हल्ला कि जहाँ भी हमरो information से माने collect करंती. तो information collect करी कि कौन करें, for example तमे गोटे supermarket store को गलो, Reliance हल्ला कि D-Mart हल्ला जोठी भी गलो, checkout पाखु जेतल आसियो सेतल तमरो phone number नंदे नहीं कि कौन करंती, they will store your information कि यही पिलाटा came and he bought these many items. तमर mainly कौन purchase करछो, clothing purchase करछो कि footwear purchase करछो ना groceries purchase करछो कि कौन करछो, और तमर frequency कौन, तमे daily आसुछो ना weekly once आसुछो ना only weekends आसुछो, सेमिति आउ तापरे जेतल भी आसुछो कौन केते amount purchase करछो.
ମାନେ ତମେ ହାଇ ଏଣ୍ଡ କଷ୍ଟମର ନା लो एंड कस्टमर फर्स्ट फॉर एग्जांपल तमे आसतो जस्ट गोटे चॉकलेट की केक किनी करी पड़ोतो नले तो आउ जने आसचंती आउ से किनुचंती दे आर मेकिंग ए बिल ऑफ 4000 5000 व्हेनेवर दे कम तो ही इज अ हाई एंड कस्टमर तो जदी स्टोर को कोन डिस्काउंट दबार अछि कि गिफ्ट दबार अछि दे नीड टू फाइंड आउट द पर्सन हु इज जनरेटिंग देम हाईएस्ट प्रॉफिट्स तो यही सब इनफॉरमेशन पाएंगे से मन कौन करंती ड्यूरिंग द बिलिंग दे विल कलेक्ट योर इन्फॉर्मेशन and then on top of it they will do the data analysis and then they will arrive to a decision that these are the people I need to concentrate, these are the products which are not performing, so I need to scrap it. Simply they need to make the decisions. Okay, that is the importance of data analysis. Clear? Why data analysis is required? Yes, no? Yes, sir. Right. Now ସେଇଟା କରିବା ପାଇଁକା what happens in industry level, let me tell you. जहाँ भी डेटा होगा जहाँ कहले मो माने सुपरमार्केट रे तम इनफॉरमेशन नहीं करी दे विल स्टोर इट सो दे नीड टू स्टोर इट एट वन प्लेस इनफॉरमेशन को गोटे जगह रे स्टोर करिया करियो दैट इज कॉल्ड डेटाबेस ओके सेटा को कहंती सेटा होची हम ट्रांजैक्शनल डेटा एवरीडे जो ट्रांजैक्शंस होची से ट्रांजैक्शन सब गोटे जगह रे स्टोर करिए सेटा होची डेटाबेस सर्वर से डेटाबेस सर्वर कोटा भी हेई पारे फॉर एग्जांपल you can see my screen right my screen देखा होची right Yes, sir. तो फॉर एग्जांपल गोटे तमरो 5-6टा स्टोर अछि हैला गोटे स्टोर हैला फॉर एग्जांपल हैदराबाद रो अछि ते हैदराबाद रो स्टोर रो इंफॉर्मेशन यू आर स्टोरिंग इट इन फॉर एग्जांपल SQL सर्वर रे ओके तापरे तमरो आ गोटे स्टोर अछि भुवनेश्वर रे ओके से भुवनेश्वर रो जो स्टोर अछि सेठी जहां भी ट्रांजैक्शन डे टू डे ट्रांजैक्शंस होची सेटा फॉर एग्जांपल तमे ऑरेकल रे स्टोर करछो इट कैन बी एनीथिंग डिपेंड्स कि सेही रीजन पाइंका तुमको कोटा बेटर लागुची तुम सेही डेटाबेस को परचेस करियो राइट तो फॉर एग्जांपल ऑरेकल रे स्टोर करछो आ गोटे स्टोर अछि तमरो बहुत छोटिया स्टोर अछि जो थरे कि डेटाबेस रो रिक्वायरमेंट नाही खाली गोटे एक्सेल फाइल रे यू कैन स्टोर द डेटा so that data you will store it in excel एमिति we can store data in any of the databases or excel files okay excel file hella नले csv file hella एई सब को हमें कोन कहया कथा these are called flat files csv हे गला कि text file हे गला okay so these are called flat files so data can be stored anywhere it can be stored in database okay it can be stored in cloud also cloud रे भी हमारा database है what is a cloud what is on premise I will tell you later on okay so basically जहाँ भी data generate होची that data will be stored in some server or some file system okay it can be excel it can be oracle it can be sql server এই डेटा को हमें कौन कहा जाए ट्रांजैक्शनल डेटा कहा जाए okay this data is called as ओके ये डेटा को हमें कौन कहा जाए ट्रांजैक्शनल डेटा टेक्निकल टर्म्स में हमें कौन कहवा ओएलटीपी माने कौन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग डेटा ओके ओएलटीपी सर्वर्स रे एई डेटा सब स्टोर करा जाए ओएलटीपी सर्वर्स को डिफरेंट वे रे डिजाइन करंती हैला ते डिजाइन एमिति करंती काहे कि ना जेतले हमें फॉर एग्जांपल बैंकिंग सिस्टम अछि तमे एटीएम रे मनी ट्रांजैक्शन करछो सेटा जदी स्लो थिबो इट विल नॉट हेल्प यू तमे अमेजन वेबसाइट रे कोन गोटे परचेस करिया को ट्राई करछो जे सेटा बफर होथिबो कोन माने जोटी पेमेंट अछि कि कोन सिलेक्शन करछो सेटा जदी बफर होथिबो एज ए एंड यूजर वी विल नॉट लाइक इट जेतले एज ए एंड यूजर वी आर यूजिंग द बैंकिंग सिस्टम और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एंड ऑल इट शुड बी वेरी फास्ट हां कि नहीं यस नो Yes, sir. so it should be very fast जे सेटा बहुत स्लो अछि बहुत स्लो सिस्टम अछि we will not like it we will go to a different store to buy it so ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग सर्वर्स जोटा थाए जो थेरा में ट्रांजैक्शन डेटा को स्टोर करो दैट विल बी वेरी फास्ट फॉर राइटिंग माने कोन ट्रांजैक्शन पर्पस पाइंका एमिति डिजाइन करा जाय छी जो थेरे की राइटिंग कैपेसिटी इज हायर ओके एठी कोन हुए राइटिंग कैपेसिटी इज हायर
बट ए सिस्टम को यूज करिके आधे डेटा अच्छी राइट ए डेटा को यूज करके आम एनालिसिस करि परिया माने करि हबो बट इट विल बी वेरी स्लो ओके तो यही सिस्टम है डेटा एंट्री पाइंका डिजाइन करा है ये जो डेटाबेस गुरा खेला डेटा एंट्री पाइंका डिजाइन करा है गोटे थोड़े डेटा एंट्री हो साइला परे ताको एनालाइज करिया पाइंका ये सिस्टम काम करियोनी माने काम करियो इट विल बी वेरी 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 स्लो ओके सो टू एनालाइज करिया पाइंका हमें आकु ट्रांसफॉर्म करिया पड़ियो माने एनालाइज करिया पाइंका जेमिति दरकार डेटा रो फॉर्मेट सेही फॉर्मेट रे हमको डेटा को चेंज करिया पड़ियो डेटा प्रिपेयर करिया पड़ियो राइट एबे जाए एनी क्वेश्चंस yes no Sir, yeah where to analyze the data, sir? yeah that I will tell you till now everything is clear mane No, right sir, now no question, sir. Sir, online transition process in OLTP, can you explain again? yeah online transactional processing means it is the transactional data the day to day operational data whatever you are creating by your website or by your store a physical store or online store every day transaction will happen yes or no Yes, some sir. customer will be coming he will be buying something for example is an online store for example tama supermarket रे अछ Yes, sir. तमे से तले गोटे कोन परचेस करलो बिलिंग पाखु गलो बिलिंग पाखु गला बुले जेतले व्हेन दे आर एंटरिंग योर इन्फॉर्मेशन माने स्कैनर कोड नै कि से दे विल एंटर द इन्फॉर्मेशन राइट व्हाट प्रोडक्ट्स यू आर बाइंग किए परचेस कला दैट इन्फॉर्मेशन एवरीथिंग दे विल एंटर इनटू द सिस्टम से सिस्टम सब बेले इट शुड बी वेरी फास्ट नहले कौन हम तुम जब बिलिंग काउंटर पाखे अध घंटा घंटा वेट करियो तुम पचर आहरी 10 जन 20 जन अच्छा दे विल लूज पेशेंस एंड दे विल लीव Okay, sir. राइट so that writing capacity माने आमे डेटा जो एंट्री करूछु इट शुड बी वेरी क्विक सेमिति करिया पाइंका वी हैव ए सिस्टम कॉल्ड ओएलटीपी सेति पाइंका आको आमे कोन को ओएलटीपी सिस्टम्स को बट एई ओएल सिस्टम माने डेटा एंट्री हेई गला हेला परे आ ऊपर जदी आमे एनालाइज करिया को चाहिबा दिस विल नॉट बी हेल्पफुल काहेकि ना एटा डिजाइन हेई डेटा एंट्री पाइंका बुझलो एबे जाय ऐसा नो Yes, sir. Yes, sir. आ परे एनालाइज करिया पाइंका कोन करा जो आई विल टेल यू नाउ तो डेटा एंट्री हे गला सब डेटाबेस रे जोटी भी जो भी लोकेशन रही डेटा एंट्री हे गला तापर कोन हुए माने रियल टाइम रे कोन हुए दैट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन तो जेतले ऑल द सिस्टम्स आम पाखे अच्छी तेतले कोन करिवे दे विल टेक दिस डेटा ओके दे विल टेक दिस डेटा okay they will take this data from all the systems okay sabu jagaru they will take the data and dump it at one place okay so data different for example you have a company and multiple locations okay so you want to put all the data at one place तमे कोन करियो सेही डेटा को गोटे स्टेजिंग लेयर रे पकेबो ए स्टेजिंग लेयर रे कोन हुए एवरी डे एठी जो डेटा जनरेट होउची से डेटा को एवरी डे की वीकली वंस कोन करिया ए डेटा को एठू पूरा काढी देई कि एई लेयर रे पके दबा एटा को एम्प्टी कर दबा बुझिलो वीकली वंस की मंथली वंस की 15 days वंस बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ डेटा जहां जेते भी डेटा अछि based on that thing what we will do we will dump the data at a staging layer all the data will be here बुझिलो yes no Yes, sir. so Sir, a operation करिया पाइंका we are going to use ETL tools okay ETL use करके we will lift the data from each of the database and put it in a another data भी गोटे database है का ये गोटे database है we will put all the data all together in one place by using some kind of ETL tools ETL tools माने कौन SSIS अच्छी मार्केट में बहुत सारा ETL tools अच्छी SSIS है गला ADF है गला Databricks है गला तापरे Informatica है गला we have multiple tools in the market those are called ETL tools ए tools को use करके we will lift the data from every database each and every database and put it in the staging layer periodically but जेतले all the data comes here it will not be in the cleaned format okay it may not be in the cleaned format तापर हमें पुन तरह कौन करिया once all the data comes staging layer को आसिला परे then what we will do we will again do some kind of ETL
पुनी सिमिलर ETL टूल्स यूज करके सेम ए जहाँ एठी यूज करथिलो सेम ETL टूल्स एठी यूज करके we will clean the data जहाँ भी डेटा हम पाखे रखी से डेटा को क्लीन करिया माने क्लीन माने कोन माने फैक्ट और डायमेंशन टेबल्स रे कन्वर्ट करे एठी पूरा डेटा विल बी इन ए सिंगल टेबुलर फॉर्मेट माने डेट भी माने को कस्टमर नोची को प्रोडक्ट नोची को कैटेगरी को सेगमेंट और एमती ऑल द इंफॉर्मेशन विल बी स्टोर्ड हियर तापर एठी कोन करिवे एठी फैक्ट एंड डायमेंशन टेबल्स बनेबे fact and what is fact what is dimension I will tell you later fact and dimension tables create hobo माने fact and dimension tables माने कोन for example tomorrow all the customers related information will be stored in one table called customer table tomar jette sara location अछि that will be stored in one table location table tomar jette sara employees अछंती तांको information will be stored in employee table तमर जेते सारा प्रोडक्ट्स अछि से प्रोडक्ट सब विल बी स्टोर्ड इन प्रोडक्ट टेबल एमती मल्टीपल टेबल्स बना जाए ओके Sir, can these are also database? This is database inside this database we will create separate tables for customer for location for employee for product जे डीलर्स अछंती डीलर पई का अलग टेबल माने हमें कोन करिया गोटे फॉर एग्जांपल हमर डेटा एमिति अछि ओके डेट कस्टमर आईडी हैला तापर कस्टमर नेम हैला तापर सी को सेगमेंट को बिलोंग करूची ओके तापर को रीजन को बिलोंग करूची को प्रोडक्ट से किनिला केते सेल हैला केते प्रॉफिट जनरेट हैला केते डिस्काउंट मिलला ई सब इंफॉर्मेशन वी विल स्टोर इट ओके आउरी बेसी कॉलम्स थाए फॉर एग्जांपल 20 30 40 100 कॉलम्स थाए तो ए टेबल को आमे कोन करिया वी विल डिवाइड इट कस्टमर रिलेटेड डेटा सब एटा ए सब अलग टेबल रे रखिया गोटे छोटो टेबल बने के ताजे रखिया डेट रिलेटेड इंफॉर्मेशन वी विल स्टोर इट अनदर टेबल प्रोडक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन वी विल स्टोर इट इन अनदर टेबल सेल प्रॉफिट डिस्काउंट जहां भी न्यूमेरिकल वैल्यूज अछि सेरा सब हमें अलग टेबल रे स्टोर करिया एमिति अलग अलग टेबल रे स्टोर करा जाए डेटा को दिस इज कॉल्ड एज डेटा वेयरहाउस ओके डेटा वेयरहाउस रे हमें कोन करिया एटा भी डेटाबेस एरा सब डेटाबेस है का एटा भी डेटाबेस एटा भी डेटाबेस एटा भी डेटाबेस खाली नेम इज डिफरेंट व्हाई द नेम इज डिफरेंट based on how you are storing the data the name becomes different all are same all are database only जोठी भी डेटा स्टोर हुए ताको डेटाबेस ही कुआ जाए ओके तो ए जो डेटा गुरा को हमें स्टेजिंग लेयर रे डंप करा जाई छी सेही डेटा को पुनी ETL यूज करके मल्टीपल टेबल्स रे कन्वर्ट करा जाए मल्टीपल टेबल्स रे कन्वर्ट करके ईच टेबल मझरे लिंक दिया जाए okay that is called data modeling I'm just giving you overall picture tapare as a data analyst what you need to do I will tell you okay एठी कोन करा जाए डेटा मॉडलिंग माने कोन ए टेबल रो ए टेबल को गोटे कनेक्शन दिया जाए ए टेबल रो ए टेबल को गोटे कनेक्शन एमती एवरी टेबल विल हैव ए रिलेशन अमंग देमसेल्फ एटा हैला परे ओके now what will happen from here एठी हमर पूरा क्लीन्ड डेटा आसी गला दिस इज कॉल्ड एज OLAP okay OLAP माने कोन ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग ओके आमे कोन करलु OLTP डेटा को ऑल द ट्रांसफॉर्मेशंस करी के फैक्ट एंड डायमेंशन टेबल बने की OLAP रे कन्वर्ट करलु ये OLAP इज यूज्ड फॉर डेटा एनालिसिस पर्पस ओके ये OLAP रे हमें डेटा राइट करिया ने माने डेटा एंट्री एथरे करिया ने OLAP रे कन्वर्ट करला परे जदी तमे डेटा एंटर करिया जाइबो इट विल बी वेरी 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 स्लो बट डेटा को रीड करिया को चाहिबो देन इट विल बी वेरी फास्टर एठी कोन हुए रीडिंग कैपेसिटी इज फास्टर हायर की फास्टर ओके हमें कोन करलु जोठी डेटा रो राइटिंग कैपेसिटी अधिका थिला OLAP रे जेतले हमरो जेतले डेटा एंट्री करियार अछि सेतले हमें कोन करछु सर्वर के एमिति डिजाइन करछु ताकि हमरो राइटिंग कैपेसिटी बहुत अधिका रहइबो एंड वी कॉल इट एज OLTP तो सेही OLTP को हमें कोन करछु बाय यूजिंग ETL टूल्स वी आर कन्वर्टिंग इनटू ए OLAP माने कोन रीडिंग कैपेसिटी एठो हमें डेटा एनालिसिस करिया रीडिंग माने कोन जो डेटा अछि ताको एनालाइज करिया हमें नुवा डेटा एंटर करूनो जहाँ एक्जिस्टिंग डेटा अच्छी से डेटा को हमें कौन कर एनालाइज कर रीडिंग कर तो रीडिंग कैपेसिटी हायर करने वी आर क्रिएटिंग दिस फैक्ट एंड डायमेंशन टेबल्स तो यहाँ बनैले आम आपको कौन कह जाए OLAP कह जाए तो वंस दिस इज डन देन व्हाट वी विल डू एज ए डेटा एनालिस्ट you will take the data from here okay
डेटा एठू डेटा एनालिस्ट नहीं करी कौन करियो ही विल क्रिएट द रिपोर्ट पावर बीआई रिपोर्ट हे गला टैब्लो रिपोर्ट हे गला कि एक्सेल रिपोर्ट हे गला जो भी रिपोर्टिंग जो विजुअलाइजेशन हुए that will be done from here by using any visualization tool. It can be Power BI, it can be Tableau, it can be Power BI, it can be Tableau, it can be Excel, it can be Cognos, ClickView. एमती मल्टीपल टूल्स अच्छी है डेटा एनालिस्ट करिया पाएगा मल्टीपल टूल्स आर देयर इन द मार्केट so say tools go to ka data ko fetch kariyo from the data warehouse it will fetch the tools and will create the reports. Similarly there is some one more another vertical that is called data science. डेटा साइंस माने कौन करिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई एमएल मशीन लर्निंग मॉडल्स एठी बनेगा तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग मॉडल्स बनने पाएगा डेटा कोठु आसी डेटा वेयर हाउस रो आसी माने ओएलएपी सिस्टम रो आसी so एटा by using what they will do by using some kind of programming language python हे गला r programming हे गला okay so by using any kind of programming language they will build the artificial intelligence machine learning models. So either what you need to know is ये जो पार्ट है okay this part is called data engineering. डेटा प्रिपरेशन जो कि डेटा आमे प्रिपेयर करूछु डेटा एनालिसिस पाइंका आउ डेटा माने डेटा साइंटिस्ट पाइंका डेटा एनालिस्ट पाइंका आमे जोटा डेटा प्रिपेयर करूछु दैट इज कॉल्ड डेटा इंजीनियर. ओके एथि पूरा हमरो डेटा प्रिपेयर होची डेटा क्लीनिंग होची हला तो दिस इज कॉल्ड एज डेटा इंजीनियरिंग. गोटे थोर डेटा इंजीनियर डेटा को प्रिपेयर करला पारे देन विल कम द डेटा एनालिस्ट. तो एठी कौन हुए this part is called is the domain of data analyst. Okay this part is called the data analyst. आउ गोटे part vertical कौन data scientist. Okay this is data scientist, data science basically. Okay so data scientist पाइन का भी data दरकार data analyst पाइन का भी data दरकार. Then what is the difference between data analyst and data science? Data analysis और data science मझे difference कौन है anybody? Hello. Hello. They're using the like AI, the machine learning, and also other tools using for upgrade. What and exactly they also are doing? Programming. Yes, they're using the data structure algorithm and Correct. Finally what is output? They are finally using programming language, they are using all those things, that is fine. But कौन पाएंगे उसको चाहिए? What they are trying to do? Machine learning model बनेले, AI बनेले, but for what reason they are creating all these things? So the main difference between data analyst and data science होची data analyst कौन करियो with the existing data माने आम पाखरे जो OLT पर जहाँ भी data entry हैला सेही data entry को आमे कौन करलु आमे structured format रे create करलु कल्ला परे सेहीटा को आमे visualization हिसाब रे देखोछु माने existing data एका simpler way रे देखोछु. Okay in the form of pie chart हे गला table chart हे गला column chart हे गला we are showing the existing data in a better format for the end users to understand and make decisions out of it, right? Yes. Data science कौन करियो with the existing data माने last 5 years रो data नहीं गले they have created all the OLAP thing and all एटा को नहीं करी एमान कौन करिए next 5 years रे कौन हबो predict करिए. Yes, exactly. Yes. Okay so data Future science is prediction, nothing but future prediction. Yes.
Data analyst is nothing but to show the historical data in the simpler format for understanding. Yes. Okay, that is the major difference between data analyst and data science. So this is the entire process. Eti data analysis report banela pore tapore phone kon hobo, ei report ta ko kon hobo, they will share it with the end user. Je bhi end user thante, for example, one of you were working in this NHAI, right? So you are looking into reports. So you are the end user. जे भी रिपोर्ट क्रिएट करा है माने डेवलपर जी भी अच्छी से रिपोर्ट बने करे तुमको दिया तुमको पठाउचंती हैला ए रिपोर्ट तुमको पठाउचंती तमे कोन करछो एई रिपोर्ट रो जहां भी डेटा तुमको दरकार तुम एक्सट्रैक्ट करि करे एंड यू आर मेकिंग डिसीजंस आउट ऑफ इट तुमे यू आर सेंडिंग टू समबडी या जोटा भी करछो once the data comes to you you will do your own analysis and you will send it to your seniors ki you have to take day to day decision making you will be doing on top of it. So this is what happens in real world. This is the entire architecture of data. Okay, कोटी start होची जोठी हमरो starting point माने जोठी transaction हैला, it can be any website, it can be online store, it can be offline store, जोठी भी transaction हैला, there the data starts हैला. Start है कि कौन हबो that then there will be ETL process. ETL माने कौन है extraction of data, transformation of data and loading of data. So starting stages, the staging layer, all the data we are putting it here, we are not going to do much of transformation. Exactly data jemiti bhi achi, semiti hi directly we are putting it in the staging layer. Then from staging layer to data warehouse. Okay, kete kete jagare multiple stages tha, stage 1, stage 2, stage 3 and 3 stages tha. It depends all on the company. So finally they are going to create a data warehouse. ये data warehouse रे कौन हुए multiple tables था, fact table, dimension tables बनने के लिए they will put it here and they will give relationship between tables. ताको कौन को आ जाए data modeling को आ जाए. So this will be converted OLTP data हमें कौन करिया OLAP data रे convert करूँ. This conversion process is called data engineering. Okay, ये data engineers will be there. There are माने एटा गोटे अलगा टीम जेमती data analyst रो गोटे अलगा टीम था, data engineers रो अलगा टीम था. Data engineer रो काम कौन हैला ट्रांजैक्शनल डेटा जोटा भी अछि सेटा को से माने OLAP रे कन्वर्ट करिया. दैट इज द वर्क ऑफ डेटा इंजीनियर. डेटा प्रिपरेशन इज द वर्क ऑफ डेटा इंजीनियर. सो डेटा जो गोटे थोड़े से प्रिपेयर करिला परे देन कम दिस इज कॉल्ड बैक एंड. आकु ही आउ गोटे नेम कोन बैक एंड. एटा होची फ्रंट एंड. ओके, बैक एंड रे डेटा जेतले जेतल रेडी हेई गला. ओके, once the data is ready in the back end then the front end team comes into picture. Okay, gote thora back end data ready hella pore then front end people like Power BI gala ki all ka data analyst they will come into picture. They will take the cleaned data. This is the cleaned data. Data warehouse पे कौन था है cleaned data था. से data को use करके client requirement हिसाब रे they will create the reporting. They will do the data analysis and then they will share it with the end user. Same the data science people कौन करे they will convert into they will predict the future. Okay, they will predict the future and then they will share it with the data analyst team भी है कौन करा जीवो एठी predict data prediction ही गला. ए prediction जो data हला again you need to show it in the form of report, right? माने ओइका ए माने predict करले कि next 5 years रे एई product ता एते सेल हबो सेई product ता सेते सेल हबो बोली सेवन prediction करले. prediction करला पले again what will happen that we need to show it in the report. सेटा पुन तोरा हमें charts हिसाब रे देखिया पड़ियो ना for the end user. So again this will come to data analyst only. एई data पुन तोरे data analyst use करके report बनेबो and then he will share it with the end user. Following? Any questions? Sir, Yeah. the total backend work माने data engineering करियो ना सर जो backend रे जति Yes. अछि Yes. सबुरा जेंति Yes. SQL server रहला Oracle Yes. रहला Excel staging. Correct. Correct. बैक एंड जे डेटा इंजीनियर जे था से खाली एई जे ही दे करियो. ओके, अप टू हियर आ परे डेटा एनालिसिस सेटा ताको जाना नहीं. ओके, ही कैन नॉट हैंडल दिस वन. सिमिलरली फ्रंट एंड डेवलपर जे पावर बीआई डेवलपर था कि डेटा एनालिस्ट जे था से एई काम करि परियो नहीं. ही विल बी डूइंग ओनली दिस वर्क. ओके, देयर विल बी ए प्राइमरी स्किल एंड सेकेंडरी स्किल हैला. केते जण कोहंती आई कैन डू बोथ हैला, बट इन जनरल फॉर एग्जांपल तमे जे मते पचारियो आई एम ए फ्रंट एंड डेवलपर, आई कैन डू ऑल दिस थिंग्स. डेटा एनालिसिस पार्ट मु करि पारि, डेटा इंजीनियरिंग पार्ट पूरा करि पारियो ना नहीं, बट
I can ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଗୁରା କେତେ ଗୁରା ଅଛି ମୁଁ କରିଛି ଏରା ସବୁ. That doesn't mean that I am a proper data engineer. I am a proper data analyst, but when required I can do some part of data engineering also. When your experience grows, ତମେ ଯେତେବେଳେ 10 12 13 15 years ର experience ହବ, obviously ତମେ ବାହାରେ ପଛପଟେ କ'ଣ ହଉଛି ତମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜାଣୁଥିବ, right? So this is ହଁ my secondary skill, not my primary skill. So this is my primary. So similarly data engineer भी केबे केबे छोटे छोटे reports बनै पारिए, but that doesn't mean he is a data analyst. Okay, this is his secondary skill, this is his primary skill. So this is a different person, this is a different person, this is a different person. ଆପଣ sir data science ରେ ବି expert ନା? Nine, I will be only on the data analyst part. Okay. Okay, so this is a different field, this is a different field, this is a different field, but all three fields combined together, then only it will be useful for the end user. गोटे टीम रे गोटे डेटा एनालिस्ट थाए, गोटे डेटा इंजीनियर थाए, जदि से कोन प्रिडिक्शन करूचंती सेतल डेटा साइंस थाए, बट दिस इज नॉट कंपलसरी, सब जगह रे एटा न थाए, बट दीस टू आर ऑलवेज देयर. डेटा इंजीनियर एंड डेटा एनालिस्ट आर मैंडेटरी फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन. जने डेटा को प्रिपेयर करे, आउ जने डेटा को एनालाइज करे. क्लियर? Okay. Yes, sir. Any other questions? Hello. Yeah. Sir, Python ର use ଟା କ'ଣ ଜାଣିପାରିବେ ଏଠି? Python जो data analytics ପାଇଁ Python ର କ'ଣ use? See, Python होची गोटे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हला. Python रे भी Okay. तमे डेटा एनालिसिस करि परियो. Python रे तमे ETL भी करि परियो. हला एठी जो ETL टूल्स हमें जेंते SSIS हला, ADF हे गला, एरा सब जो डेटा ब्रिक्स हे गला, एगुरा को सब यूज करके हमें डेटा क्लीनिंग करूछु. Python रे भी you can do all these things. Python रे हाँ भी you sir. can do the data analysis. Okay, हाँ. but in general organization level रे Python को यही सब पाइन का बेसी यूज करा जाए नहीं. काहे कि now we have specific tools for every work. Okay, data engineering पाइंका we have specific tools, so we are going to use that, but that doesn't mean कि Python use करके एटा करि पारिया नहीं. नहीं करि पार, को भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हला, any programming language you can do all these things. हमें डेटा एनालिसिस भी करि करी we can show it, but it will not be easy for the end user. माने गोटे पावर बीआई रिपोर्ट तमे देखिबो आ पाइथन रो रिपोर्ट देखिबो, तारो जमीन आसमान रो फरक थिबो. पावर बीआई इज स्पेसिफिकली फॉर विजुअलाइजेशन पर्पस. Sir, Python ଟା sir? पाइथन इज फॉर प्रोग्रामिंग, जेमते कुम कहल ना डेटा साइंस पाइंका. हाँ. जदि आमे कोन प्रिडिक्ट करिया चाहबा सेतल डेटा एनालिस्ट टूल्स तो यूज ही हबने. विथ बाय यूजिंग दिस टूल्स वी कैन नॉट प्रेडिक्ट एनीथिंग. So सेतल कंपलसरी यू हैव टू गो विथ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक पाइथन की आर प्रोग्रामिंग एमतिया जहां भी गोटे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करिया को ही पड़ियो. So to answer your question, Python is used for data science people. ଓ data analysis ରେ Python କିଛି ମାନେ ସେମିତି ଦରକାର ନାହିଁ? ମାନେ ସେଇଟା କହୁଛି ତମେ ଏଇଟା କେମିତି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେବି. ମାନେ optional ନା କ'ଣ sir Python ଟା data analytics ପାଇଁ? ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ତମେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବାର ଅଛି, ତମେ ସାଇକେଲ ରେ ବି ଯାଇପାରିବ, ବାଇକ ରେ ବି ଯାଇପାରିବ, ଫ୍ଲାଇଟ ରେ ବି ଯାଇପାରିବ ହେଲା, ବଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ not recommended to go you on a bike or a cycle. ତା ମାନେ ଏଇଟା ନାହିଁ କି ତମେ ଯାଇ ପାରିବନି. ୟୁଜ କରନ୍ତି ସର୍ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ପ୍ରକାର ଅଛି ମୋ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ କୁ. ସରି हेलो, सो मु जदी पाइथन से प्रोग्राम माने परमानेंट सॉल्यूशन टाइप ऑफ को माने बुझ पारले नहीं, काइंड वी आर यूजिंग पाइथन. तुम वॉइस ब्रेक होची. सर सपोज मो क्लाइंट को मते रेगुलर रिपोर्ट दबार अछि मोर क्लाइंट को, सेटा मतलब माने एसक्यूएल हाई स्कूल जोटा में देखु शॉर्ट करूछन से परमानेंट भलिया मते परिश्रम करिया करेक्ट. पड़िबो. मझे मझे तुम वॉइस आसुने. परमानेंट सॉल्यूशन वाला काम पाइथन प्रोग्राम एटा. I don't know, it is only for me or everybody. ओके ओके सर, एबे सुबि लगी सर अभी. या Hello. या हां हां हां. हेलो माय वॉइस इज ऑडिबल सर? या टेल मी. या हम कहली फॉर परमानेंट सॉल्यूशन पर्पस वी आर यूजिंग द पाइथन एक्चुअली. परमानेंट इन द सेंस
मतलब एवरी मंथ मते प्रोग्राम लिखिबार नाही सपोज मु धर एसक्यूएल ले गोटे लिखिची जर पाइथन जदि मु सेटा लिखि दउची सो मते एटा हेल्प करिवो कि मते बेसी प्रोग्राम लिखिया पड़िबोनी प्रति मास मु डैशबोर्ड क्रिएट करी मो क्लाइंट को मेल करि परिबी सेंड करि परिबी The same thing we do it in Power BI also, na? Power BI रे भी हमें कौन करचु? We are not creating every day or every month a new dashboard. Okay, we are creating the dynamic dashboard जोटा कि every month it will refresh whenever you need it, it will refresh and accordingly हमें जो भी timeline देइछु सेही timeline रो data ही देखेबो. सर हमें SQL रे भी ଏବେ ସବୁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ପାଇଥନ ମାଗୁଛନ୍ତି ଡାଟା ଆନାଲିଟିକ୍ସ ସହିତ ମାନେ ମାନେ ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ଏବେ ପାଇଥନ ର କି ଡାଟା ଆନାଲିଟିକ୍ସ ସହିତ ଆଗରୁ ହଉନଥିଲା ତିନିଟା ଟୁଲ୍ସ ରେ ହେଇଯାଉଥିଲା ଏବେ କିନ୍ତୁ ସବୁ କମ୍ପାନୀ ମାଗୁଛନ୍ତି କି ୟେସ୍ ୟୁ ହାଭ ନଲେଜ ଅଫ ପାଇଥନ they may ask you knowledge, but it is not mandatory because see, I am working from long time. I don't have a Python knowledge, complete Python knowledge. I know a lot of people are there who don't have a Python 100% knowledge. They know just the basics and all. Okay, they see more organization achi, and I am using a tool called for example Tableau ହେଇଗଲା କି Power BI ହେଇଗଲା for visualization purpose. Why I will hire a person who knows Python? I will hire a person who knows, who is an expert in Power BI. जो tool ମୋ ପାଖରେ ଅଛି जोटाକୁ यूज करिया को पड़ियो, I will try to find out a person who is expert in that one. ସେଇଟା expert ହେଇକିରି तापर he has a Python knowledge, then well and good. yes ओके तापर जदि सीटा अछि वेल एंड गुड, बट तुम पाखरे जदि पाइथन नॉलेज एक्सपर्ट नॉलेज अछि बट आई डोंट हैव द विजुअलाइजेशन नॉलेज, देन मते बेसी बेनिफिट होबो नै इफ आई हायर यू. ओके, इट ऑल डिपेंड्स कि सही कंपनी फॉर what they are hiring you. They are hiring for yes, a sir. Python developer. It's vary to project actually. Yes, It's vary to correct, project to project. correct. So if they want in that project a Python developer mandatory, then definitely they will look for a person who knows Python. Okay, having more knowledge is good always. When you have 2, 3, 4 skills and all, definitely they will prefer you. Next tomorrow they may need you, so they will hire you now itself. But for that specific project, jaha bhi dorkar sei skill tom pakhare achi ki nahi, that will be their first criteria. Okay. In this one କିଛି ବୁଝି ହେଲା ନାହିଁ କି any questions ki starting ରୁ ending the data flow, data movement କେମିତି ହଉଛି, that high level understanding ମିଳିଲା? हेलो सर. Yes. सर ଆମେ ହଉଛୁ ଡାଟା ଆନାଲିଷ୍ଟ ଡାଟା ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆମକୁ ମାନେ ପୁରା ଏକ୍ସେଲ ସିଟ୍ ରେ ପୁରା ଡାଟାଟା ଦେଇଦବ ତ ତାକୁ ଆମେ ଧରିକି କୋ କମ୍ପ୍ଲିଟ କର. ଡାଟା ଇଞ୍ଜିନିୟର କଣ ଆମ ଏକ୍ସେଲ ସିଟ୍ ରେ ଡାଟାଟା ଦବ ନା ସାର୍ ଆମକୁ ରିପୋର୍ଟ ବନେଇବା ପାଇଁ? ନାଇଁ, ଡେଟା ଏକ୍ସେଲ ରେ ଦବ ନାହିଁ, ଏକ୍ସେଲ ନୁହଁ ଡେଟାବେସ୍ ରେ ଦବ. ଓହୋ, ଲାଇକ୍ ଏସକ୍ୟୁଏଲ. ହଁ, ଏସକ୍ୟୁଏଲ ସର୍ଭର ହେଇଗଲା କି ଆଜୁର SQL DB ହେଇଗଲା, Oracle ହେଇଗଲା, okay, Snowflake ହେଇଗଲା, ଏମିତି they will do all these things and put it in a database. Okay. Data warehouse. We will connect to that database and pull our data, required data. Okay. Excel ରେ huge amount of data SQL ଟା ରହିପାରିବନି sir ନା. mandatory. ନା ରହିପାରିବନି. Correct. So that's why they will put it in database. SQL ଟା mandatory ଆମେ ଜାଣିଲେ, Power BI mandatory ଜାଣିଲେ, SQL ବି ଆମକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର. SQL ବି as a Power BI developer, SQL ବି ଦରକାର. ଜାଣିବା ଦରକାର. କାହିଁକି ଦରକାର, let me tell you. ତମେ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ବନେଇଲ ହେଲା, by connecting to this one you have created a report. ସେଇ ରିପୋର୍ଟ ରେ ଯୋଉ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆସିଲା ସେଇଟା କରେକ୍ଟ କି ରଙ୍ଗ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା? For example, let me quickly show you. Okay, just I will show you quickly. Okay, it's our Power BI tool. Let me open this. तापरे मो पाखरे SQL server अछि. Let me open that also. এটা মो database. Okay, SQL server रे मो पाखरे data अछि. Eta my server name, so I will connect to this one. I have different databases here. Okay, adventure works such for example eta ko hi connect kariya. So we will go to Power BI. SQL get data re jayenge. We have SQL server connector. I will select this connector. I will give my server name and I will click on OK. Real time username password मागियो, but मु देई नै सेत ପାଇଁ मते मागु नै हला. तो ये डेटाबेस भीतर एते सारा टेबल्स अछि. मु कहली ना फैक्ट और डायमेंशन टेबल थिबो, एरा सब मोर फैक्ट टेबल्स, एरा सब मोर डायमेंशन टेबल. एरा सब
डेटा इंजीनियर क्रिएट को बनना है आम पाए ओके यस नो हेलो SQL ଟା mandatory, Excel ଟା ବି ଦରକାର, Power BI ବି ଦରକାର, but sir Python ଟା ହିଁ ଟିକେ doubt ରହିଯାଉଛି ତ। हाँ रो आगे लेट मी शो यू व्हाट वी डू इट इन एक्सेल सॉरी एसक्यूएल तो एबे जे हमें एसक्यूएल किछि भी यूज करिनो हमें खाली डेटा पुल करूछु राइट तापर कोन हबो फॉर एग्जांपल आई हैव टेकन दिस फैक्ट टेबल हमको दरकार तापर हमको ये प्रोडक्ट टेबल दरकार ओके कस्टमर टेबल जदी कोन अछि न कस्टमर So guys, don't worry, ये सब हमें cover करिया, okay? सर खाली yeah just yeah देखो। I am just showing you one example खाली okay I am not teaching you anything I am just showing you one example तो तीनटा टेबल टा हम नेले लोड कर देली एबे जे हम एसक्यूएल रे किछि भी यूज करनो खाली एसक्यूएल रो डेटा जोटा अछि सेटा पावर बीआई को पुल करलो हम एक्चुअली पावर बीआई यूज करछो एटा हैला कस्टमर डेटा आसी गला प्रोडक्ट डेटा आसी गला सेल्स इंटरनेट सेल्स डेटा आसी गला तापरे मो पाखे रिलेशन अछि एटा को कहंती डेटा मॉडल ओके ओलैप जोटा मो कहउथिले ना एटा होची ओलैप मो पाखे कस्टमर टेबल हैला सेल्स टेबल हैला प्रोडक्ट टेबल हैला ए डेटा को लिंक अप करलो ओके तापरे मो गोटे फॉर एग्जांपल गोटे टेबल व्यू बनाउची से टेबल रे व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो इज for example each product each model mo pakhare keteta model achi okay we have these many models we have each model re kete sale hela that I want to see so sale mane kono sale amount okay एटा हला आको मु कोन करी गोटे ऑर्डर रे रख देबे फॉर एग्जांपल डिसेंडिंग ऑर्डर रे हमें रखिलो ओके ए नंबर्स करेक्ट की रॉन्ग हमें केंती जानिया हमें कोन ड्रैग ड्रॉप करके पके देले आसी गला तो एटा करेक्ट की रॉन्ग केमिति जानिया देन वी नीड टू राइट द सीक्वल करी केमिति लिखिया वी विल गो टू सीक्वल ओके सो एठी हमें वी विल राइट ए क्वेरी हम को डेटाबेस को कनेक्ट एरा सब हम पारे कहबे हैला so what I am doing I am taking two columns what are the two columns I am taking model name और sale amount okay select model name comma sum of sales amount आपको रीनेम कर देबे as total sales from को टेबल रे आछे fact internet sales बट दीटा अलग अलग टेबल रो आछी ये सेल अमाउंट टा फैक्ट इंटरनेट रो आछी मॉडल नेम टा आरो टेबल प्रोडक्ट टेबल रो आछी so we need to join that हैला join product dim product on fact internet sales dot को कॉलम हमें यूज करके ज्वाइन कर ले इफ यू कम हियर एंड सी हियर प्रोडक्ट वी आर यूजिंग प्रोडक्ट की ओके प्रोडक्ट की यूज कर एरा सब मु देखे भी पारे इट इज डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड नाउ Okay. just I am trying to show you okay product key is equal to dim product dot product key group by okay when I execute this one I will get it so now it could be order kariya for example order by total sales descending एटा देखो मोर जो पावर बी रे मोर जो वैल्यूज आसिला से वैल्यूज और एसक्यूएल रे जो वैल्यूज आसला से दीटा सेम अछि कि नहीं सेम अछि कि mountain 200 7929,475 Yes, sir. 7929,475 road 150 55,49,896 exactly match है ना ऐसा Yes. नो सब वैल्यूज मैच होबो को भी वैल्यू हमें चेक कर ले इट विल मैच
तो गोटे थर रिपोर्ट हैला परे आम काम सरला नहीं आमे कौन करिया we will need to do the unit testing माने कौन we will create a document okay unit testing document हमें बनाया पड़ियो as a developer we need to create a document like this हमें कौन करिया for example power bi output कहि के कौन करिया आर गोटे स्क्रीनशॉट नबा सब विजुअल रो मुझे गोटे विजुअल बनै छी तो मो से गोटे विजुअल रो स्क्रीनशॉट नौ एटा नै कि हमें कौन करिया we will put it in here then database output तापर कौन करिया जो क्वेरी हमें लिखी जो तार आउटपुट एमती नबा नले with along with the query भी दरकार ना सेमती नबा we will take this and put it here and then we will say validated successfully माने एटा भलो फॉर्मेट करिया मु जस्ट तुमको देखौ छी कि कोन करा जाय रियल टाइम रे तो हमें वैलिडेशन करिया पई का विदाउट नोइंग एसक्यूएल कैन वी डू द वैलिडेशन No, sir. we cannot do the validation that's why SQL is important हमें SQL data preparation पई का यूज करिया नहीं as a data analyst we are not going to prepare the data by using SQL language SQL language दरकार पड़ियो but that is for data engineer they will use the SQL language for a different purpose as a data analyst हमें भी SQL use करिया for a different purpose हम purpose कौन to write the whatever you have done in Power BI the same thing you need to do it in SQL also to get the result ये रिजल्ट को हम पावर बीआई रिजल्ट संगे मैच करके वी नीड टू क्रिएट ए डॉक्यूमेंट कॉल्ड यूनिट टेस्टिंग डॉक्यूमेंट ये डॉक्यूमेंट हमें कौन देखौछु कि हमर जो पावर बीआई रे वैल्यू आसिला और जो डेटाबेस रे जो डेटा अछि से डेटा बोथ आर सेम देयर इज नो नथिंग रॉन्ग इन द डेटा ये जो टेस्टिंग डॉक्यूमेंट हमें जेतले बनेबा एंड शेयर इट विद द यूजर देन दे विल गेट ए कॉन्फिडेंस कि हां जहां भी हमें रिपोर्ट रे देखौछु ऑल आर करेक्ट वैल्यूज Hello, sir. या Sir, as I'm a PHP developer, I am using MySQL. राइट So, what is the difference between MySQL and SQL? no difference okay there will be very minor difference okay both are databases on mysql both oracle ro sql hella microsoft ro both are two different brands no difference okay ame jo sql query lekhiba that is also 99.9% will remain the same okay jaha bhi jo bhi database eta jo ame sql query lekhuchu na this is called sql query structured query language so structured query language will remain same across all databases તમે MySQL यूज करो તમે SQL सर्वर यूज करो તમે Oracle यूज करो તમે Snowflake यूज करो તમે IBM DB2 यूज करो जहाँ भी डेटाबेस यूज करियो तम लैंग्वेज विल नेवर चेंज इट विल रिमेन द सेम तामाने गोटे डेटाबेस रे तमे सिखिला माने को भी डेटाबेस रे तमे काम करि पारियो Okay, sir. ओके क्लियर एनी क्वेश्चंस आई थिंक दैट्स ऑल आई वांटेड टू कवर टुडे माने ठीक है हाई लेवल रे आइडिया दबाको चाहूतिली आई विल नॉट एक्सपेक्ट कि तमे सब किछि बुझी पारियो गोटे दिन रे बट इट शुड बी लाइक डेटा केमिति फ्लो हुए स्टार्टिंग रो एंडिंग जाई एज ए डेटा एनालिस्ट तम काम कोन डेटा इंजीनियर रो काम कोन डेटा साइंस रो काम कोन एज ए डेटा एनालिस्ट एसक्यूएल रो नॉलेज कोन पई का दरकार these things it should be clear Okay, sir. okay only conceptual things it should be clear हमें एबे जाय किछि भी स्टार्ट करिनो how to do things and all we have not started it just the overall high level concept it should be clear that is the agenda for me today Okay. चंद्रशेखर Yes, sir. all good किछि Yes, sir. डाउट अछि कि किछि बुझी परलो ना किछि नहीं No, sir. Yeah. all good Yes, sir. others abhilash abhilash are you there from the starting कि मझिरे असलो नहीं सर मैं मिडिल में आया था okay maybe you need to go through the recording once again okay ओके सर Sir, Please next take class. next class Shankar sir will tell you Yeah, next class we'll have on Saturday. Okay. So I think new sir, we can stop recording now. yeah